Good morning, everyone. In today's English class, beta, we are going to discuss the question answers of the chapter Alice in Wonderland, and then we'll continue with forms of verb. Right? So let us start with the question answers. The first question is, where did the rabbit go? Please, you will virtually raise your hands, and if you want, you can write down the answers in the chat box. Yes. Where did the rabbit go? Yes, I've written the question in the chat box also so that you can read. Very good. I can see so many students who are raising their hands. Madhvi will tell me the answer. Yes, Madhvi, quickly. Where did the rabbit go? The rabbit. Mhm. Ma'am, please repeat the question. The question you can see in the chat box. Where did the rabbit go? The rabbit go in a big hole. The rabbit, In a big rabbit hole. yes, it jumped down into a big rabbit hole. Okay, right? So where did the rabbit go, everybody? The rabbit jumped down a large rabbit hole. Right, everyone? Okay, very good. And let us move to question number 2, bete. Question number 2 is, how did Alice reach Wonderland? How did Alice reach Wonderland? Yes, sorry, there's some spelling mistake in the chat box. Yes, the question is, how did Alice reach Wonderland? Again, I can see only a few students who are raising their hands. I want everybody to raise the hand. Yes, bete. If you have understood the chapter nicely, if you know, you have listened to the teacher nicely, you must be knowing the answer. Yes. Harveer Singh, unmute yourself. Can you please tell me the answer? Yes, Harveer. Harveer, unmute yourself. Raise your hands virtually, bete, those who know the answer. Yes. How did Alice reach Wonderland? Prachi, can you tell me the answer, bete? Yes, Prachi. Yes, good morning, ma'am. Yes. What is the answer? Ma'am, I don't know. You don't know. Why didn't you listen to the chapter? Didn't you understand that? Yes, please, who's gonna tell me? Vanshika, can you try? How did Alice reach Wonderland? Yes, Vanshika's written she reached नहीं आएगा. Vanshika second form आएगा. Whenever we have did in the question, जब भी question में did आता है, तो answer में हमेशा answer verb की second form आती है. So it would be reached. ed आ जाएगा second form. Yes, she reached the Wonderland by going after the. Better word is by following the rabbit. Okay, so you must use the proper word. The proper word is by following the rabbit. Harsimran, can you please try the answer? Harsimran, can you try the answer, bete? Yes, bete. Bache, I told you, if you not, yes, very good. So the better word is followed. Followed is a better word. Instead of writing going after the rabbit, you can write on follow karna kisi ko. That's what I told you. So the exact answer that you need to write is, when the rabbit started running, Alice followed the rabbit and jumped into the rabbit hole and reached Wonderland. So when the rabbit started running, initially start कहाँ से हुआ था? Rabbit जब भागने लगा था, तो तब जो Alice थी उसने उसको follow किया था. So the answer would be, when the rabbit started running, Alice followed the rabbit and jumped into the rabbit hole and reached Wonderland. Right? Okay. Let us move to the third question, bete. The third question that we have is, what strange things did Alice see? So what strange things that did Alice see in the Wonderland? Yes.
What strange things did Alice see in the Wonderland? Yes, very good. I can still see somebody, some of the students. Yes, Sargun, you need to unmute yourself and speak the answer. Alice saw a small door of 15 inches in the Wonderland. Very good. And she also saw a glass table with a golden tea. Yes, very good, Sargun. So the answer is Alice saw. Now in the question the word was see. लेकिन did था, इसलिए हम see का second form लिखेंगे. जब भी question में did होता है तो हम उस verb का second form लिखते हैं, तो see will become saw. So Alice saw a very small door about 15 inches high, and she also saw a glass table with a golden key. Very nice. So the next question that we have is, what while listening to the story, what did Alice see? Yes, while listening to the story, what did Alice see? Yes. While listening to the story, what did Alice see when she was listening to the story? Harshita Bands. Harshita Bands, unmute yourself and speak the answer, bete. Harshita, I could see your name, raising your hand. That's why I'm asking you. Right, Bhavesh Singh. Yes, Harshita. Yes. There's some network issue. Bhavesh, can you try? Please repeat the question. I have written the question in the chat box. Bhavesh, yes. While listening to the story, what did Alice see? But I'm asking you, you have raised your hands and now you're not unmuting yourselves. Pratima Joshi, can you please tell me the answer? Ma'am, Alice saw a rabbit scampered by. Yes. Good morning, ma'am. Now listen to me. Alice saw. Yes. Alice saw a rabbit. Because there's some network issue. A big rabbit hole and Wonderland. No. While lying down, वो वहाँ पे story सुनते सुनते तो सारा कुछ थोड़ी ना देख लिया था. जब वो story सुन रही थी अपनी sister से, when she was listening to the story. Now the question is asking, while listening to the story, what did Alice say? तो आपने जो answer है वो उसी तरह से start करना है. So your answer will start in the same manner. You will say, while listening to the story, comma, Alice saw a white rabbit scamper by भी लिख सकते हैं, या running quickly भी लिख सकते हैं. Both are same. So while listening to the story, Alice saw a white rabbit scamper by. Right? Very good, Sandeep. Okay, now next question is, what was different about the rabbit that Alice saw? Yes, quickly think about the answer. What was, yes, think about the answer, bete. What was different about the rabbit that Alice saw? Yes. Who's going to tell me? Again, the same hands. I want somebody new. Who's going to tell me, bete? Yes, who will tell me? Tanmay, can you speak the answer? Yes, Tanmay. Unmute yourself, Tanmay. Very good. Yes, Ekam, all right. Ekam will try. Yes, Ekam. Unmute yourself, bete. Good morning, ma'am. Yes, good morning. It was wearing a blue waistcoat, hanging Yes. a watch, and he Ve- was talking. Very good. Very good, bete. The answer is yes. What was strange? बहुत सारी चीजें strange थी उसके बारे में. So the rabbit that Alice saw was wearing a blue coat and had and had pink eyes, and he could also talk like humans. और वो human beings की तरह बोल भी सकता था. Very good. Gaurika has written the different about the thing that was different about rabbit was that
that ever saw. But this is not making any sense. ठीक है, तो आपका आंसर इज करेक्ट, बट जो आपने इनिशियली स्टार्टिंग लिखी है वो प्रॉपर नहीं है. एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ. Describe in your own words the garden that Alice saw. Yes, Ashpreet, can you do you want to tell the answer? If you can unmute and tell what was different about the garden that Alice saw. Yes, you can take the help of your books, bete. My question is describe in your own words the garden that Alice saw. Quickly, see in the books. Take the help of your books. That's what the books are with you. Yes. Yes, Ashpreet, do you know the answer? Can you try? Quickly see where this part is given. Garden wala kahan pe hai? Question. Yes. Viren has, I think, already given. Devansh, Soni, can you tell me the answer of this question? Raise your hands, everybody, those who know the answer. Devansh, Soni, unmute yourself and tell me the answer of this question, bete. I'm not getting any response. Yes. Good morning, ma'am. Yes, good morning. Devansh, be quick, bete. Oh, all right. You, I don't know. You don't want to answer, or there's some network issue with you. Okay. My voice is cracking, bete. There must be some network issue. I'm trying hard. Yes, we are not talking about the rabbit now. We are talking about, yes, Pulkit Bansal, unmute yourself quickly. We're talking about the garden. Good morning, Yes, ma'am. good morning, Pulkit. Please hurry up, बच्चे. The Alice saw द नहीं आता कभी a भी, fountain. किसी के नेम के आगे कभी द नहीं आता है. Yes, Alice saw. Yes. Alice saw a fountain and green plants in the garden. Right, but this is not completely correct. So if you can see here in the book also, आपके book में भी बहुत straight away दिया हुआ answer. The garden that Alice saw was the loveliest garden she had ever seen. मैंने आपको बोला था बुक में इसका आंसर दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने बुक ओपन की और देखने की कोशिश की होती तो. So the garden that Alice saw was the loveliest garden she had ever seen, and it had beds of bright flowers and cool fountains. So this answer you have to write straight away from your book, right? So I hope the question answers are clear. Today I'll send you the question answers, but now quickly open your grammar books, page number 90. Open your grammar books, page number 90. And what I was saying is that I'll send you the question answers. Please make sure that you people write down the question answers today in the notebook. Yes, page number 90 in your grammar books, everyone. We are going to discuss the forms of verb. Page number 89 we have already done. Page number 89 आप already कर चुके हैं in PT1. So this time we are going to do PT2 में आपका page number 90 है. Yes. Should we start? I hope everybody has opened the book. Okay, let us start. So I am quickly going to, now the first thing that you need to know is कि आपने जो second line होती है present continuous tense, ये इस पे आप you can put a cross, simply pencil से एक line लगा सकते हैं, because आपने ये learn नहीं करने हैं. आपको मैम ने पहले भी बताया होगा कि this is just for your knowledge, कि अगर इन वर्ड्स के साथ ing लगा दे तो क्या स्पेलिंग्स बन जाते हैं, ये सिर्फ इसलिए होते हैं. अदरवाइज व्हेन वी आर लर्निंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब में प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म करते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको इनके नेम्स आने चाहिए. फर्स्ट फॉर्म को सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को सिंपल पास्ट फॉर्म बोलते हैं, एंड थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं. अगर आपको एग्जाम में आता है राइट डाउन द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, तो आप कैसे लिखेंगे, राइट? ओके बेटे, सो लेट अस क्विकली डिस्कस द वर्ड्स. यस,
first word that we have is Excuse me, BRE. ma'am. Yes, bete. Yes, बच्चे. मैम हमने सेकंड लाइन पे लाइन लगानी है. Sorry. सेकंड लाइन पे, हाँ जी, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे. Present continuous. Okay, should I start now? The first word that we have is breathe. Please, जब मैं ये word बोलूंगी तो आपने भी बोल के देखना है, because बाद में आपको words बोलने ही नहीं आते हैं. ठीक है? So without unmuting yourself, you will repeat the words after me. The first word is breathe, breathe, breathe. Now what is breathe? Breathe करना, सांस लेने को हम breathe करना बोलते हैं. जब हम सांस ले रहे हैं, breathe कर रहे हैं, that is called breathing, right? So it is, breathe is a verb. Second word that we have is bring, brought, brought. Now this is important. Bring means कोई चीज लेके आना. कोई चीज जब आप लेके आते हैं तो उसे bring बोलते हैं ना. Bring that book. लेके आओ वो book. ठीक है? And उसका second form and third form remains same. Brought and brought. अब ऐसे आपने कैसे याद रखना है कि bring में R आता है ना, तो brought में भी R आना है. Brought, brought. Right? Third word is burn. What is the third word? Burn. Now burn मतलब जब कोई चीज जलती है ना? तो burn, burnt, burnt. अब देखिए इसमें आप लिख सकते हैं burn का burnt, burnt भी लिख सकते हैं और burned, burned भी लिख सकते हैं. NED भी लिख सकते हैं और NT भी लिख सकते हैं. Both are correct. Right? दोनों ही correct हैं. But make sure कि जब आप लिखते हैं तो एक ही जैसा लिखना है. अगर आप burnt लिखना चाहते हैं तो थर्ड फॉर्म भी burnt ही लिखेंगे. ये नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म burn BRUNED लिखते हैं और फिर BRUNT लिखते हैं. नो, दोनों अलग नहीं होंगे. अगर NT लिखना है तो थर्ड फॉर्म में भी NT ही आएगा. अगर NED लिखना है तो थर्ड फॉर्म में भी NED आएगा. क्लियर टू एवरीवन? क्लियर व्हाट आई हैव टोल्ड यू? हरवीर, यस बेटे, आपका ध्यान तो नहीं लग रहा है. I'm looking at everybody. Some of you are really looking very inattentive in the class. Show me your books quickly, everybody. मुझे जल्दी से जरा books दिखाइए. In your hands, जल्दी, hurry up, quickly. Let me see how many of हरवीर अपनी book नहीं नजर आई आपको मुझे अभी तक. Okay, so we have done. First word was breathe. Second word is bring. Third word, I think I've skipped. The third word was build. BUILD, build. Now build करना means कोई चीज बनाना, है ना? Building word कैसे बनी है? Build से बनी है. So build means to make something. Yes, Sargun, you can put your books down, bete. You can put your books, everybody, down now. Look into the books. So build का होगा build, built. BUILT हो जाएगा. D की जगह will make it T. So build, built, built. Okay. Next word is burn. Burn we have discussed. Burn, burnt, burnt. Yeah, burn, burned, burnt. Right. Next word, bete, please read the word with me. Pronounce. Try to pronounce the word. The next word that we have is burst. Burst हो जाना. What is bursting? Bursting means फट जाना. आपके bubbles जो बनाते हैं, balloons जो blow करते हैं, tires, ये सब के लिए हम क्या word use करते हैं? क्यों फट गया? So जब आपके balloons फट जाते हैं, आप बोलते हैं burst हो गया. Bubbles बनाते हैं, वो जो फटते हैं bubbles, आप बोलते हैं bubble burst हो गया. So burst होना मतलब फट जाना. So burst will remain same. Burst के बिल्कुल same रहेंगे. Burst will remain burst, burst, right? Next word is BUI, by. Now, what is the difference between BUI, by, and BRING, bring? Can anybody tell me quickly? Raise your hands. Can anybody tell me the difference between the two? BUI, by, and BRING, bring? Yes. Tanvi, unmute yourself. You want to tell the answer? Yes, bete. Bring means लेकर आना. Buy खरीदना. Very good, Tanvi. Very good. Bring का मतलब चीज को लेके आना. वो ऑलरेडी आपके पास हो सकती है, आपने लेके आनी है. So you say bring it to me. But buy का मतलब होता है आप जब कहीं किसी को मनी देके, पैसे देके वो खरीद के लेके आ रहे हैं, then it is called buy. और buy की सेकंड फॉर्म buy, bought, bought होगी. Bring की क्या थी? Brought, BR आ रहा था, क्योंकि bring में R आता है ना, तो उसमें भी R आता है brought में. लेकिन जब buy की हम फॉर्म्स लिखेंगे then it would be BOUGHT, bought. Clear everyone? Next word that we have is care.
केयर करना मतलब किसी का ध्यान रखना, है ना. आई केयर फॉर माई मदर, आई केयर फॉर माई फैमिली. सो दैट इज केयर. केयर विल बिकम केयर, केयर्ड, केयर. राइट. नेक्स्ट वर्ड इज, जस्ट वेट अ मिनट बेटे. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कैरी. कैरी करना मतलब कोई चीज लेके जाना. सो कैरी, कैरिड, कैरिड. ठीक है. वाई आ रहा है ना, तो उसमें आईईडी लग जाएगा. वाई को रिमूव करेंगे एंड इट विल बिकम आईईडी, कैरिड, कैरिड. बेटे प्लीज, आई कांट सी यू पीपल मूविंग योर लिप्स. यू आर नॉट ट्राई टू स्पीक द वर्ड विद मी. यस. कास्ट, 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 कास्ट. हम बोलते हैं, आपने सुना है कभी कि किसको कास्ट कर रहे हैं, मतलब किसको हम ले रहे हैं. बोलते हैं ना कि उसने अपनी मूवी में उसको कास्ट किया है. कास्ट करना मतलब उसको अपनी मूवी में लेना या कहीं पे भी उसको काम देना, कास्ट करना. ठीक है. दैट इज कॉल्ड कास्ट. सो कास्ट में ऑलरेडी पीछे टी आ रहा, तो इट विल आल्सो रिमेन कास्ट, कास्ट. नेक्स्ट वर्ड इज कैच. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. इसे कैच बोलते हैं. एवरीबॉडी विल स्पीक कैच, राइट. एंड कैच की सेकंड फॉर्म इज कॉट. CAUGHT, कॉट. ये कॉच नहीं है. कुछ बच्चे इसको कॉच बोलते हैं. दिस इज नॉट कॉच. So it will be CAUGHT, caught. So catch will become catch, caught, caught, right? G is silent here. Catch करना तो आपको पता ही है catch करना क्या होता है. Next word is cause. CAUSE, cause. Cause means किसी चीज को reason बनना. What caused the floods? Floods का क्या cause था? क्या? The heavy rainfall caused the flood. Heavy rainfall का reason था. Heavy rainfall की वजह से floods आए. So यहाँ पे cause जो word है वो क्या है, यहाँ पे verb है. So cause, caused, caused. I have pasted the Google form once. I hope you people have filled it in. Next word is change. Change होना मतलब बदल जाना. So change, change, change. Next word is choose. Choose करना, कोई चीज select करना. So choose becomes choose, chose, क्योंकि ओस डबल की जगह सिंगल हो गया. So it will be called chose. Please बोलेंगे सारे. Choose, chose, chosen. Right? How do you pronounce it? You say choose, chose, chosen. Right? Next word that we have is close. Close कर देना, किस चीज को बंद कर देना. So close becomes close, closed, closed. Next word, come. Come here. You're calling somebody who are आपकी तरफ. So that would be a action. That would be an action word, and the answer would be done. Come, came, come. पहले come है, फिर came बन जाएगा, और फिर दोबारा थर्ड में फिर से come आ जाएगा. Right? Next word, compare. Compare करना. Compare word तो हमने भी बहुत बार किया है. Degrees of comparison में हमने word बहुत बार सुना है. Compare करना, किसी के साथ अपनी तुलना करना, किसी के साथ अपने आप को compare करना. So compare, compared, compared. Right? Next word is complete. Complete करना, काम complete करो. Complete your work. So it is a verb. So it would be complete, completed, completed. मैम कहते हैं complete your work, तो आप कहते हैं मैम I have completed. आप I have complete नहीं बोलते क्योंकि वो third form है. Third form में आप क्या बोलेंगे मैम I have completed. Okay. Next word is continue. Continue करना मतलब उस चीज को आगे बढ़ाते रहना. So continue is the first word. Continued, continued is the second and the third form. Right? Next word is copy. कॉपी, ये कॉपी जिसमें लिखते हो, नोटबुक नहीं है कॉपी. कॉपी मींस किसी की चीटिंग करना, किसी को कॉपी करना. आप कहते हैं मैम ये मेरी आंसर कॉपी कर रहा है. सो कॉपी इज अ वर्ब हियर. सो इट वुड बी कॉपी, कॉपीड, कॉपीड. अगेन इफ यू पे अटेंशन, कॉपी वर्ड का एंड किससे हो रहा है, वाई से हो रहा है. सो जब वाई से एंड होता है तो उसमें हम वाई को रिमूव करके उसकी जगह आईईडी लगा देते हैं. सो इट वुड बी कॉपी, कॉपीड, कॉपीड. नेक्स्ट वर्ड इज कॉस्ट. कॉस्ट मींस किसी आपको वो चीज कितने की कॉस्ट की. मैं बोलती हूँ कि दिस बुक कॉस्टेड मी 100 रुपीज. इस बुक के मुझे कितने पैसे पे करने पड़े, क्या मुझे देना पड़ा, इसकी जगह मुझे 100 रुपीज देने पड़े. यहाँ कॉस्ट एज अ वर्ब आ रहा है. राइट? तो कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट. जिन वर्ड्स के पीछे टी होता है वो यूजुअली चेंज नहीं होते हैं. अगर आपने यहाँ ध्यान दिया होगा, बर्स्ट, BURST, बर्स्ट वर्ड था तो उसे हमने चेंज नहीं किया, वो सेम रहा. ऐसे हमने एक और वर्ड किया था, यहाँ पे कॉस्ट वर्ड कर रहे हैं हम. कॉस्ट में भी COST, कॉस्ट ही रहेगा. ठीक है? ओके. नेक्स्ट वर्ड इज क्रीप.
क्रीप वर्ड से क्रीपर वर्ड बना है। क्रीपर्स पढ़े हैं ना आपने ईवीएस में? क्रीपर्स होते हैं जो ऊपर 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 किसी के सपोर्ट से जो प्लांट्स चढ़ते हैं उन्हें क्रीपर्स बोलते हैं। या जो जमीन पे किसी की जिसको सपोर्ट चाहिए वो अपने आप से खड़े नहीं हो सकते, तो ऐसे क्रीप करना मतलब रेंग रेंग के चलना, नीचे सपोर्ट ले लेके चलना, क्रीप करना, राइट? सो दैट इज क्रीप। सो क्रीप विल बी क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट, CREPT, crept, crept. Okay. Next word is cry. Cry, so it's a very common word. You all cry all the day, है ना? So cry will become. Excuse me, ma'am. Yes, bete. Ma'am, Amandeep is pasting the link. Okay. So creep will be creep, crept, crept. Okay. Next word is cry. Sorry, cry we have discussed. Cry में भी देखो end में क्या आ रहा है? Y आ रहा है. So y को remove कर देंगे and IED add कर देंगे. So it would become cry, cried, cried. Next word that we have is cut. Cut word already इसमें मैंने आपको दोबारा बता रही हूँ कि T आ रहा है ना, जिन वर्ड्स में एंड में T आता है हम उन्हें मोस्टली चेंज नहीं करते हैं. So cut will remain cut, cut, cut. Another word is dance. Dance, danced, danced. इसमें सिंपली हमने D लगा देना है. नेक्स्ट डील. डील करना मतलब किसी के साथ कैसे आप पेश आ रहे हैं, किसके साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, किसके साथ आप कैसे उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, डील करना. ठीक है. सो डील बिकम्स डील, डेल्ट, डेल्ट. प्लीज स्पीक द वर्ड्स बेटे, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको बाद में से पढ़ना नहीं आएगा. डील, डेल्ट, डेल्ट. ओके. नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज डाई. डाई मींस इसकी डेथ हो जाती है तो बोलते हैं ना यस डाइड. सो डाई, डाइड, डाइड. Another word, next word is dig. Dig करना मतलब किसी चीज को खोदना. ये word आपने EVS में पढ़ा होगा, dig. So dig becomes dig, dug, dug. Next word that we have is divide. Divide करना, division का sums करते हो. Divide करना मतलब किसी चीज को बांट देना. मम्मा कोई चीज लेके आती है तो आप ब्रदर सिस्टर्स में डिवाइड करती है ना, इक्वल दे देती है, राइट? सो डिवाइड करना मतलब बांट के किसी को देना. सो डिवाइड बिकम्स डिवाइड, डिवाइडेड, डिवाइडेड. ड्रॉ. ड्रॉ करते हैं. Draw, drew, drawn. इसको बोल के देखेंगे. Draw, drew, drawn. Right? Dream, dreamt, dreamt. Drink, drank, drunk. Yeah, these words are very common. Drink, drank, drunk. Drive, drove, driven. Drive, drove, driven. And the last word is drop, dropped, dropped. Now here P double हो जाएगा.